हेलो, गुड मॉर्निंग डियर किड्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं मिट्टी से बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ बर्तन जो कि हमने खुद क्ले के साथ बनाए हैं अपने हाथों से। तो देखिए जो जो बर्तन हमने बनाए हैं वो आपके सामने हम सेट कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए हमने मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हैं, प्लेट, ग्लास, उसके बाद जिसे बोलते हैं कढ़ाई, ओवन दस्ता बनाया है, इसको सलवटा बोलते हैं। उसके बाद हमने कितली बनाई है, फ्राई पैन बनाया है, उसके बाद एक घड़ा बनाया है जिसमें पानी भरते हैं, और उसके बाद हमने जो है एक छोटी कढ़ाई बनाई है और एक बड़ी बनाई है। उसके ऊपर उसका ढक्कन यानी कि लीड भी बनाया है। तो देखिए बर्तन बनाने के साथ साथ हम इनके नाम भी सीख रहे हैं, यानी कि ये लर्निंग भी हो रही है। तो क्ले के साथ हमने बनाया है। तो देखिए अब हम इनमें मुख्तलिफ जो है ना हम चावल रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं, चावल दालें वगैरह जैसे हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो हम इनको डेकोरेट करेंगे ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे आपको। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं, रेडी हुए हमारे बर्तन हमने इनको कैसे रेडी किया। तो आगे हम बताएंगे कि हमने इनको कैसे तैयार किया, यानी कि किस तरह से तैयार किया। ये तो हमने तैयार कर लिया और ये खुश्क हो चुके हैं। तो हम चावल पका रहे हैं। देखिए हमारे चावल पक गए हैं। अब हम थोड़े प्लेट में डालेंगे और हम बंद कर देंगे कढ़ाई का ढक्कन और हम इसको चावलों को यहाँ से सर्व करेंगे। देखिए हमने छोटे छोटे मिट्टी के लड्डू भी बनाए हुए हैं, हमने सलाद भी रखा हुआ है। हम अपने मेहमानों को सर्व करेंगे। जब हमारे मेहमान आएंगे तो हम उनको पानी डाल के गिलास में राइस सब कुछ देंगे। तो देखिए अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं कि हमने इनको कैसे बनाया। तो आप मेरी वीडियो पर एंड तक बने रहें ताकि आप एंजॉय कर सकें हमने इनको कैसे बनाया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी मज़ेदार वीडियो बनाती रहती हूँ जिसमें हम क्ले के साथ मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। हाउस किचन सेट्स हो गया, और उसके बाद लर्निंग ABC हो गई डिफरेंट क्ले के साथ, यानी कि ये तो क्ले सिंपल क्ले है एक कलर की। उसके बाद हम दूसरी एयर ड्राई क्ले के साथ जिसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। सबसे मज़ेदार चीज़ है कि ये जो क्ले है आप इसको ड्राई होने के बाद अपनी मर्ज़ी का कलर कर सकते हैं। दूसरी क्ले है वो भी कलरफुल होती है, उस पर भी आप मार्कर के साथ कलर कर सकते हैं, लेकिन इस क्ले में कलर करने का ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब ये ड्राई हो जाती है तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से जो चाहे कलर करें और जैसा चाहे मर्ज़ी डिज़ाइन बनाएं। तो देखिए कुछ बर्तन हमने पहले बनाए हुए थे और कुछ बर्तन हम बनाएंगे आपके साथ। हमने प्लेट बना ली है और आगे नेक्स्ट भी हम अपने मज़ीद बर्तन बनाएंगे। तो आप एंजॉय करें और साथ साथ देखें कि हम इनको किस तरह बना रहे हैं।
Upiana string day. Tuturel strip trip bell sound ding ding ding. Kids laugh. Funny. Boing. Boing boing tick tick tick. Hop hop gray and puck puck. Hey. Put puck poo. Ding ding ding, oh ding ding, ding ding ding. Kids laugh, ha ha. Ding da, toy piano, la la la. Clap clap, hey, sound effect. Boing boing. Upiana string day. Tuturel strip trip bell sound ding ding ding. Kids laugh. Funny. Boing. Boing boing tick tick tick. Hop hop gray and puck puck. Hey. Put puck poo. Ding ding ding, oh ding ding, ding ding ding. Kids laugh, ha ha. Ding da, toy piano, la la la. Clap clap, hey, sound effect. Boing boing. Upiana string day. Tuturel strip trip bell sound ding ding ding. Kids laugh. Funny. Boing. Boing boing tick tick tick. Hop hop gray and puck puck. Hey. Put puck poo. Ding ding ding, oh ding ding, ding ding. Kids laugh, ha ha. Ding da, toy piano, la la la. Clap clap, hey, sound effect. Boing boing. Upiana string day. Tuturel strip trip bell sound ding ding ding. Kids laugh. Funny. Boing. Boing boing tick tick tick. Hop hop gray and puck puck. Hey. Put puck poo. Ding ding ding, oh ding ding, ding ding. Kids laugh, ha ha. Ding da, toy piano, la la la. Clap clap, hey, sound effect. Boing boing. Upiana string day. Tuturel strip trip bell sound ding ding ding. Kids laugh. Funny. Boing. Boing boing tick tick tick. Hop hop gray and puck puck. Hey. Put puck poo. Ding ding ding, oh ding तो डियर किड्स देखें हमने बर्तन कैसे बनाए हैं वो भी आपने देख लिया। और ये देखें हमने इनमें डिफरेंट आइटम्स रख ली हैं। अब हमारे मेहमान आएंगे, हम उनको खाना खिलाएंगे। जल्दी करें, हमारे गेस्ट आने वाले हैं। तो हमने मटके में पानी डाला है, हम ग्लास में पानी डाला है। जैसे हमारे गेस्ट आएंगे हम उनको सबसे पहले पानी सर्व करेंगे, उसके बाद